Absolute URL. So URL stands for Uniform Resource Locator. Every web page has its own URL, and URL also known as the web address. यही वेब एड्रेस है जो कि आप टाइप करते हैं अपने वेब ब्राउज़र में किसी भी स्पेसिफिक पेज को विज़िट करने के लिए. सो URL कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स. हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रही है. हमने ये एड्रेस दिया हुआ है HTTPS और फिर ये PIIC का आपको वेबसाइट आपको नज़र आ रही है. तो URL कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स: स्कीम, सर्वर नेम, पाथ एंड रिसोर्स. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTTPS स्कीम है, सर्वर नेम यहाँ पर PIAIC.org है और डॉक्स यहाँ पर पाथ है और रिसोर्स है एंट्री टेस्ट कराची. So you have 2 basic choices when it comes to the selection of the URLs: absolute URL and relative URL. So you have 2 basic choices when it comes to the selection of the URLs: absolute URL and relative URL. Absolute URL की ये एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है. So this link is an absolute link because it includes the domain name. Absolute links are required for external links which direct you to another website. जब भी आपने दूसरी वेबसाइट से लिंक करना है तो आप हमेशा absolute URL यूज़ करेंगे. So absolute URL may begin with HTTP or HTTPS. ठीक है? And absolute URL is the full URL to an internet file. An absolute URL is independent or free from any relationship. It is a full URL or one that contains the entire address of the page, contains all the information necessary to locate a resource. So always remember, an absolute URL does include the website domain name, contains complete web address like this. These type of URLs are often found when a website is linking out to another website that is not using the same server as your website. तो ये हमेशा याद रखें, when you link to a different website, the value of the href attribute will be the full web address for the site, which is known as absolute URL. Okay, तो ये आपको अब जो एग्जाम्पल स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इस एग्जाम्पल को हम कोट करेंगे अभी. लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरी साइट से अपनी वेबसाइट को लिंक करवा रहे हैं. So these absolute URLs are self-sufficient. तो आप absolute URLs यूज़ करते हैं when you are defining a link from your website to another website. अब ये PIIC.org ये पूरा absolute path है जो आपने define किया है, और PIIC.org/with ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये दोनों absolute URLs हैं.